So hello everyone, I hope you can listen to me. This is Bipav Dwivedi from SSBCrack exams, and today we have come with the part 2 of the chemistry live classes which we are going to solve today. So as we learned from the MCQs tomorrow, the same thing is going to happen today, and as I have already told you, जितने भी questions हम practice करने वाले हैं ये questions हमारे लिए काफी काफी important होते हैं और ना कि सिर्फ क्वेश्चन नॉट ओनली द क्वेश्चंस इसके साथ साथ जो आपको फॉलो अप क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं इवन दे विल बी इक्वली यूजफुल सो टुडेस माय रिक्वेस्ट विल बी कि यू ऑल बी वेरी इंटरैक्टिव आई एम मेंटेनिंग अ कांस्टेंट monitor at the chat. Okay, so I'll just be taking your questions also, and please be very prompt in answering the follow-up questions with each and every question that we are solving. Okay, so we will basically be covering the important chemistry questions. It can be for NDA examination, for CGS, for INET, Territorial Army, Airmen, CAPF. So various examination, all the MCQs, they have been compiled as an essence, and that will be discussed tomorrow. So I see that the participants, they have started joining here. So here I can see good morning Akhil, Deep, good morning, good evening Deepti, good evening Akhil, Manu, good evening, welcome. And we have Akshat Singh also, he said Jai Hind sir, so Jai Hind to you as well. Then we have Prashant Yadav, good evening Prashant. So I hope you all are ready, just let me know. And today we are going to have a very interesting discussions. Believe me, आज आपका chemistry के जो question solve करने का तरीका है, that is really going to change, and you will feel it कि chemistry questions you can do wonders. Okay, so definitely your dream is very important for us, and we are going to take a very good care of that. Rest assured about that. And how that is going to happen, see, the first thing which you are having, पहला advantage आप यही देख रहे हैं, we are giving access to the live classes which is really going to make a lot of difference. Okay, आपके पास वीडियो लेक्चर्स हैं और हमारे जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज तैयार करती हैं, जो पिछले एग्जाम्स के पैटर्न और आने वाले ट्रेंड को देखते हुए बनाए जाते हैं, और दिस आर रियली बेनिफिशियल. तो मॉक टेस्ट है, उस मॉक टेस्ट में डेवलप होगी आपकी रैंकिंग और आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं. ठीक है, so that's the best way you'll get to know through rank analysis. We have given you detailed short sweet simple notes. Okay, syllabus आपका updated रहेगा, you've got offline access, and also this is very important. कई लोग को पता ही नहीं रहता, जोश तो है, जज्बा तो है, पर जाना कहाँ है, कैसे जाना है, पता नहीं. Don't worry, we have got it covered. So we have the study plans. Okay, तो कोई भी एग्जाम है, we just give you 60 days or 40 days accordingly study plan, so that you know किस दिन कौन सा सब्जेक्ट कैसे कहाँ कब पढ़ना है. ठीक है, you'll get the detailed notification on that, right? So stay tuned everyone, and just do like and share this with all the aspirants who are around you, or let them be benefited, let them also know if they're able to solve these questions or not. And we have many participants joining us, so good evening Anirudh, and we have future soldiers here also. Anay Patak is there, right? So, and definitely in the live session, in the app, you will also have an access to the PDF of all the questions that we are discussing, that we discussed yesterday, and today's it will be uploaded soon. So stay tuned everyone. And all the courses, as I told, have I have got it covered. Okay, so we have NDA course, CGS, AFCAT, and the OIR test is really a game changer here, because you know it is going to make sure whether you get merit in or not. Okay, so OIR scores, we have developed a number of questions, and here you will have good accuracy of making it in the screening as well, right? So here we have all the online classes. We also give you the mock test, right? And generate a ranking accordingly. So now everyone just gear up for the first question. We are going to have the first question, so I hope सारे लोग तैयार हैं. Or some students are asking which topic is going to be discussed today. So we will basically discuss the important chemistry questions. They have been taken from various topics. Okay, it can be from physical chemistry, organic, inorganic. Okay, so we have taken important questions from that areas, right? So I hope everyone is ready, and please आप लोग जो है जो follow up questions है उनके answers भी देना, and try to understand. So here is your first question. Okay, सबके घर में धुलाई होती है, ठीक है, और वो होती है सोप से.
ठीक है, कभी कभी मम्मी पापा भी धुलाई करते हैं, लेकिन ये सोप वाली धुलाई जो है, ओके, सोप एंड डिटर्जेंट, ये किसका फॉर्मेशन करती है? बेसिकली ये 10th क्लास का फोर्थ चैप्टर है, कार्बन कंपाउंड से है। जस्ट आंसर दिस फास्ट, ओके। I am giving you more 5 seconds. I should get the answers right now. Okay, so I have what a lovely audience I have got. You all are future aspirants. I can see that most of you have answered correct. Abhishek has answered correct. Anay has answered correct. Right? So well done, Akhil. Okay, well done, Meenakshi. You all have done it correct, and the correct answer is मिसल। ओके, सो ये जो मिसल फॉर्मेशन होता है, बेसिकली यू नो कि हमारे जो सोप होते हैं, दिस इज नथिंग बट दी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, कार्बोक्सिलिक की लॉन्ग चेन सोडियम होती है, जिसमें जो कार्बन वाला पार्ट होता है विच इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, एंड द आयोनिक पार्ट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, फोबिक मतलब फियरिंग। सो आज से आपकी किसी भी सब्जेक्ट में whenever you hear the word hydro means water, okay, hydroelectricity, electricity through water, okay, hydrophobic water fearing, hydrophilic water loving, okay। so एक मिसल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वाटर कंटिन्यूसली रन अवे होता रहता है, इस चक्कर में द क्लीनिंग एक्शन टेक्स प्लेस, राइट। सो ये आपका था पहला क्वेश्चन। अब इसमें मेरे को ये बताओ कि जो सोप होते हैं, राइट, सोप होते हैं, क्या वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं? जस्ट राइट इट, ओके। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सोप्स के बारे में बताइए मेरे को जल्दी से। ओके, सो आई एम जस्ट वेटिंग योर रिप्लाई। टेल मी, क्या है ये एनवायरमेंट के ऊपर असर करता है कि नहीं करता? सोप्स, जल्दी जल्दी, आई जस्ट वांट द रिप्लाई फॉर दैट बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हियर आई हैव गॉट द आंसर्स, राइट। सो अना, इट्स करेक्ट, सोप्स आर मोस्टली बायोडिग्रेडेबल, है ना, नुकसान होता है डिटर्जेंट से। बाय द वे, इफ यू हैव लर्न केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, यू विल आल्सो नो कि आजकल हमारे पास बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक डिटर्जेंट्स भी आ चुके हैं, ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। ये क्वेश्चन देखिए, एनडीए और सीडीएस एग्जाम्स में जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर है, दिस इज वेरी फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी। कुछ ना कुछ क्वेश्चन उनसे पूछता है, मैं तो मतलब लिख के दे सकता हूँ कि देखो ना कुछ एसिड बेस से वो पूछेगा ही क्वेश्चन, ओके। सो एवरीवन प्लीज, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द थर्ड ऑप्शन, ओके, सोडियम कार्बोनेट। सो जो सोडियम कार्बोनेट होता है उससे हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, एंड दिस वॉशिंग सोडा इज यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है ना, वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है इससे रिमूव करते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, ये है, बताइए कॉस्टिक सोडा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा? Okay, when you know that washing soda is also known as soda ash, अपने anhydrous sodium carbonate is also known as soda ash, for your information, right? Now my question is caustic soda, what is the formula of caustic soda? Okay, so yes, Abhishek, you answered first, great. So the what is the formula of caustic soda? I am waiting for reply here. गुड अखिल, यू हैव गॉट इट करेक्ट, इट इज NaOH। प्रशांत यादव, NaOH ट्वाइस नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोक्साइड का चार्ज भी -1 होता है, सोडियम मेटल का चार्ज +1 है, तो इसलिए इसमें ट्वाइस नहीं आएगा। अनय इज करेक्ट, अजीत नो, KOH गलत है, ओके, इट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। अभी कई अपने रिप्लाईज डिलीट कर रहे हैं, आई कैन सी दैट। एनीवे, प्लीज रिमेंबर कॉस्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ओके। नाउ we move on to the next question। ये question again, देखो example ये है, equation ये है, equation can change but the concept, the question being asked here can be the same। so आप लोग को इस question में identify करना है oxidizing agent को। so just try to identify, okay, sorry, you have to identify कि कार्बन कौन सा एजेंट है, whether it is reducing agent or oxidizing agent, okay। so please try to give the answer for this question, okay। so I have started getting responses and I see most of you have got it correct। reducing agent होता है, okay, carbon is a reducing agent here। so Anil has done it correct, Abhishek has done it correct, okay, Anil, Sakshi, you all have got it correct, right। तो देखो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या। देखो, इफ यू लुक एट जिंक हेयर, है ना, इफ अगर आप जिंक ऑक्साइड देखोगे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में देखोगे तो सिर्फ जिंक है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, जिंक को छोड़ दिया है,
है ना. सो देयर हैज बीन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर जिंक ऑक्साइड, है ना. तो जिसका ऑक्सीजन रिमूव होता है वो उसका क्या होता है, उसका रिडक्शन होता है. और जो चीजें रिड्यूस होती है दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना. सपोज इफ आई एम गेटिंग ऑक्सीडाइज, इफ आई एम गेटिंग रिड्यूस्ड, आई एम अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड इफ आई एम गेटिंग ऑक्सीडाइज, आई एम अ गुड reducing agent. ओके, सो यहाँ कार्बन में हमने देखा कि कार्बन जो प्रोडक्ट में है कार्बन मोनोऑक्साइड बन जा रहा है, ठीक है ना. तो दिस कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है. ओके, एंड कार्बन इज अ this reducing agent. Okay, so now you should also know that oxidizing agent को oxidant भी बोलते हैं और reducing agent को reductant भी बोलते हैं, ठीक है ना. तो कभी कभी they can use this language also. In spite of writing oxidizing agent, in spite of writing reducing agent, they can use oxidant and reductant also. So don't fall for that. उस टाइम गलत मत करना, इस चीज को ध्यान रखना, right? So that thing you have to remember. Now let's go to the next question, right? So here is your next question. Okay, read the question properly. ये थोड़ा tricky हो सकता है because आपने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सुना हुआ है, सारे options के बारे में. So just read the question properly. Bubbly Pandey, AFMC is the best option, you know, to pursue medical course. Okay, you will be doctor as well as the person in uniform. So it's a great pride if you make it to AFMC. Okay, so yes, I have started getting answers for this, right? So the correct answer for this question is constant proportion was, okay, this says constant proportion. So basically Anay has got it correct, and Anil has got it correct, Abhishek has got it correct, education boy, you are also correct. Okay, Sanjana has got it correct. So the reason for this is जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, ओके, इसका मतलब ये होता है कि जैसे वाटर है मान लो. अब द सोर्स ऑफ वाटर इज, यू नो, देयर आर सो मेनी सोर्सेस ऑफ वाटर, है ना. आप लोग को नदी में पानी मिलता है, यू हैव ओशंस, यू हैव लेक्स, यू हैव सी, यू हैव पॉन्ड, यू हैव ट्यूबवेल, यू हैव ग्राउंड वाटर, यू हैव कैनल्स. ओके, सो देयर आर सो मेनी सोर्सेस ऑफ वाटर. बट वाटर के सोर्सेस कितने भी हो, हर जगह वाटर का फॉर्मूला वही रहेगा, दैट इज 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो ये चीज एप्लीकेबल है हर एक कंपाउंड के बारे में. तो ये जो लॉ दिया था, ये एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है जोसेफ प्राउस्ट, जिनकी फोटो आप देख सकते हैं, उन्हें प्रणाम भी कर सकते हो आप, ठीक है. सो ये जो भाई साहब है, इन साइंटिस्ट ने, ही गेव द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है ना. तो इनके अकॉर्डिंग यही था कि किसी एलिमेंट या कंपाउंड का सोर्स क्या है वो मैटर नहीं करता, उसके जो एटम्स है वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे, ठीक है. जैसे मैंने आपको वाटर का एग्जांपल बताया कि नो मैटर वेयर यू फाइंड वाटर, इट विल ऑलवेज हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, राइट. सो दैट थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ. चलो अब मुझे बताओ, एक और लॉ होता है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हु गेव दैट लॉ, ठीक है ना. विच साइंटिस्ट गेव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जल्दी मुझे इसका आंसर बताओ. ओके, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी सो मेनी करेक्ट रेस्पॉन्सेस फॉर दिस, राइट. So yes, education boy has got it correct. अने डेल्टन नहीं होगा, डेल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था और एटॉमिक थ्योरी दी थी. सो इसका नाम है एंटोनी लेवोइजियर, ठीक है. कभी आपके पास समय हो तो गूगल में इसका पूरा नाम सर्च करना, आपकी जबान को लकवा मार जाएगा. इट्स अ वेरी लॉन्ग नेम, ओके, एंड इन टिपिकल फॉर्मेट. So I hope you are able to get it. Right, so the name is Anthony Lavoisier. He gave the law of conservation of mass, right, which says कि जितने मास, जितने रिएक्टेंट का मास होगा उतना हमारे प्रोडक्ट का मास होगा. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. ओके, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है. नाउ द टाइम हैज कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर यू गो. ओके, ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी फ्रीक्वेंट इन एग्जाम्स लाइक टेरिटोरियल आर्मी, एग्जाम्स लाइक AFCAT. ओके, सो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फास्ट, राइट. आप लोगों ने कई बार वेल्डिंग वालों को देखा होगा, तो उन्हें इसका साइंस तो पता नहीं, लेकिन दे आर अप्लाइंग दिस थिंग इन देयर रियल लाइफ. ओके, सो दैट थिंग इज देयर, राइट.
So the correct answer for this question is the option A. Okay, acetylene in oxygen. Basil आपने C option click कर दिया, that is wrong. आयुष, education boy, ध्रुव, गरिमा, Basil, Abhishek. Okay, not Abhishek. The rest of them are correct. Okay, so basically जो acetylene होता है ये कुछ नहीं होता है, this is ethyne. Okay, see there is ethene, there is ethane, there is ethyne. So ethyne को हम लोग acetylene भी बोलते हैं. So when it's a gas and when you combine it with oxygen, a lot of heat is produced and that can be used to melt a metal. So उसको बोलते हैं acetylene welding. Right? So carbon carbon का bonds होता है. Right? So like this, if you want to learn with tricks and tips, and make your learning very easy, you have to, subscribe our channel, download the app and enroll in our courses, right? So here, once you're taught a particular topic in down to earth manner, right, then you will be able to understand the concept in the very crystal clear, and not only understand, you'll be able to test it as well through the quizzes, through the practice question answers that we have, right? Bubbly Pandey, you can post this on the comment. I'll get back to you after the live class. Okay. So next thing is the next question. Okay. So hurry up. I won't give you much time for this question. I want the answer. ये टंगस्टन जो मेटल है, अगर आपको ध्यान हो, it is used in the bulb filament. जो बल्ब की फिलामेंट होती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, right? So you have to take care of that. Okay. जल्दी जल्दी, और आप लोग को अपने एलिमेंट्स के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, डब्ल्यू. ओके, सो देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ एलिमेंट्स बड़े सिंपल और साधारण होते हैं. जैसे मैंने बोला कैल्शियम सिंबल है Ca, मैंने बोला लिथियम सिंबल है Li, है ना. और कुछ तो कुछ ज्यादा ही सिंपल होते हैं. ऑक्सीजन O, कार्बन C, बोरॉन B, फास्फोरस P, सल्फर S, है ना. तो ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल है. कुछ कुछ थोड़े आपको याद करेंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे ना जो आपका दिमाग घुमा देंगे, है ना. अब जैसे यही इन्हीं को देख लो, टंगस्टन लिखा है, टंगस्टन सिंबल है W, है ना. अब किसको कब कैसे क्लू लगे, है ना. तो W जो थे वो हमारे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वोल्फ्राम, उनके नाम पे पड़ गया ये. ठीक है. सो यू शुड नो योर एलिमेंट्स वेरी 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 प्रॉपरली. ओके, तो लेट्स हैव सम क्वेश्चन ऑन एलिमेंट्स, राइट. सो फर्स्ट थिंग इज, आपके पीरियोडिक टेबल में चार चार ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्लैनेट के नाम पे हैं. कैन यू राइट द नेम ऑफ दोस एलिमेंट? ओके, राइट द नेम्स ऑफ एलिमेंट जिनके नाम प्लैनेट के ऊपर है. मैं चार बता रहा हूं, ठीक है ना. जल्दी बताओ कौन से हैं वो एलिमेंट. ठीक है. सो ये टंगस्टन का आपको याद रखना कि 3400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है, जिसके कारण इसको उस फिलामेंट में यूज किया गया है. सो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. नेम 4 एलिमेंट्स जो प्लैनेट के ऊपर नाम रखे गए हैं ना. यू शुड नो. ओके, प्लूटोनियम आ चुका है. शुभम वेरी गुड. मीनाक्षी ने दे दिया मरकरी. देखो 2 प्लैनेट खत्म हो चुके हैं, अब बाकी 2 बचे, जल्दी क्लेम करो उसे. ठीक है. ओके, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, है ना. और ये आ गया यूरेनियम. ओके, सो नेपच्यूनियम टाइप का कुछ नहीं है. वी हैव प्लूटोनियम, वी हैव यूरेनियम, वी हैव मरकरी, ओके, एंड वी हैव प्लूटोनियम, राइट. सो दीस आर द 4 एलिमेंट्स. चलो, अब ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है. पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 लेटर ऐसे हैं जो आपको अभी तक की जिंदगी में कभी नहीं देखने को मिलेंगे. बस 2 एलिमेंट ऐसे हैं, बट सॉरी, नॉट 2 एलिमेंट्स, 2 लेटर्स. 2 लेटर्स ऐसे हैं, 2 लेटर ऐसे हैं जो कभी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट में आपको नहीं दिखेंगे. जल्दी बताओ वो लेटर कौन से हैं. क्या वो Z है, क्या वो X है? जल्दी बताओ कौन से 2 एलिमेंट है जो कभी भी आपको, कौन से 2 लेटर्स है जो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में. ओके, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिप्लाई. रेस्ट आप लोगों ने प्लैनेट की थ्योरी खोज डाली है ना. प्लूटोनियम, मरकुरी, ओके, देन यू हैव यूरेनियम. सो लेट मी नो एवरीवन कौन सा. ओके आयुष, दैट्स वंडरफुल. एक लेटर हमें मिल चुका है, वो है J. ठीक है. अक्षय ने कहा H, लेकिन हीलियम में तो H आता है अक्षय, तो हीलियम तो कैंसिल हो गया. X, सॉरी X नहीं हो सकता, जेनॉन में X आता है. ठीक है. J के अलावा एक और एलिमेंट है, एक और लेटर है. आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट एबल टू गेट दैट. J सेलेक्ट हो चुका है, अब एक लेटर आपको और ढूंढना है. कौन सा लेटर है, जल्दी बताओ मुझे. Q नहीं, हाँ सॉरी, Q. शुभम आपने दूसरा भी खो डाला. सो 2 ही हैं, जोकर और क्वीन. J और K ऐसे लेटर्स हैं जो पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको
कभी नहीं दिखेंगे। ठीक है, सो ये मिस्ट्री हो चुकी है डीमिस्टिफाइड। जे और क्यू है ना। वैसे एप्पल वाले मोबाइल महंगे क्यों आ गए उसका कारण मुझे पता लग गया, उसमें 75 से ज्यादा एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब एक तरह से आधा पीरियोडिक टेबल ही उनके पास रखा हुआ है वहां पे। राइट, सो दैट वाज अ फन फैक्ट। लेकिन याद रखना, जे और क्यू जो है ये दो ऐसे एलिमेंट्स है जो पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको, सॉरी एलेटर्स है जो कभी पूरे टेबल में नहीं दिखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो, ये पूरे आपको सिंबल्स अच्छी तरह से प्रॉपर्ली याद रखने पड़ेंगे। राइट, सो लेट्स हैव लास्ट वन फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दिस कि टेल मी फोर एलिमेंट्स, ओके जस्ट टू एलिमेंट्स which have got their name on some places, है ना, किसी जगह के हिसाब से उनका नाम रखा हो गया। ओके, सो अक्षय वाई इट्रियम, इट्रियम करके एक है, इट्रियम और इटरबियम करके दो एलिमेंट्स हैं जिनमें वाई आता है। ठीक है, तो वाई नहीं होगा। ठीक है, विवान वाई नहीं होगा। राइट, तो जल्दी मुझे बताओ कुछ ऐसे एलिमेंट जिनका नाम किसी प्लेस के नाम पे रखा गया है। ओके, आपके सामने पीरियोडिक टेबल है तो उधर से देख लो, कहीं से देखो, जस्ट ट्राई टू टेल। ओके, अक्षय आई टोल्ड इट्रियम और इटरबियम दो एलिमेंट्स है, सो इट इज नॉट एलिजिबल, ओनली जे एंड क्यू आर एलिजिबल। राइट, यस, जेमिनियम, यू हैव गॉट इट करेक्ट। कैलिफोर्नियम कैलिफोर्निया के ऊपर है ना। अब इनिडियम इंडिया के ऊपर नहीं, उसका कोई और लॉजिक है। ठीक है, हाँ, और बताओ और बताओ। कैलिफोर्नियम एक आ गया, एक एलिमेंट और चाहिए मुझे विच इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ ए प्लेस। ओके, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। अमेरिकियम, वेरी गुड, वी हैव गॉट अमेरिकियम ऑल्सो। और एलिमेंट आप लोग कैसे उसको भूल गए। फ्रेंशियम है हमारे पास, जर्मेनियम है हमारे पास। अब आ रहे हैं एक एक करके। ठीक है, हम तो बता ही देंगे सब कुछ। ओके, ऑल राइट एवरीवन, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, अब आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आने वाला है एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। गो एंड अटेम्प्ट। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन बट लॉट्स ऑफ फैट हिडन। यस, जर्मेनियम में दिस फ्रेंशियम सब आ चुका है। ओके, सो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन नाउ। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एसिटिक एसिड। विनेगर में जो पाया जाता है वो है एसिटिक एसिड। सो बेसिकली इसमें 5 to 8% कंपोजिशन होता है एसिटिक एसिड का। सो अक्षय, साक्षी, विवान, आप लोगों ने इसका आंसर किया है सही। ठीक है, सो 5 to 8% एसिटिक एसिड जो होता है, 5 to 8% इथेनॉइक एसिड होता है एसिटिक एसिड में। ठीक है ना। सो जो विनेगर है, आपने कई बार देखा होगा, आप लोग रेस्टोरेंट जाते हो, सो समटाइम्स दे मिक्स विनेगर इन द अनियंस एंड उसका बहुत ही पंजेंट स्मेल आता है। विनेगर हैज गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पंजेंट स्मेल। ओके, सो दैट इज वन थिंग। और विनेगर एक प्रिजर्वेटिव भी है ना। आजकल कई वो अचार आते हैं ना, उनका भी ऐसा खतरनाक स्मेल होता है, एकदम वो डायरेक्ट ब्रेन को अफेक्ट करता है। सो क्योंकि इट्स अ प्रिजर्वेटिव ऑल्सो, विनेगर इज अ प्रिजर्वेटिव ऑल्सो। राइट, विद दिस वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अभी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरे को लगता है ये तो 10 सेकेंड में सॉल्व होना चाहिए। ओके, स्टिल आई गिव यू 20 सेकेंड, जस्ट अटेम्प्ट दिस। ओके, नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन का आंसर किशोर, ध्रुव, यू ऑल डिड इट करेक्ट। विवान, यस यू आंसर्ड फर्स्ट। ओके, हाँ, चाउमीन में विनेगर यूज किया जाता है। ठीक है, चलो। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन बी। ओके, सो शुभम, ओके शुभम, अनय, विवान, यू ऑल हैव गॉट इट करेक्ट। राइट, सो इसमें जो है बेसिकली मैंने पहले ही बताया था कि इफ एन एलिमेंट इज देयर, okay, if an element is there, then on upper side we have got the mass number, on the lower side you have got the this atomic number. So जितने प्रोटॉन होते हैं उतने एटॉमिक नंबर होता है। ओके, और जो मास नंबर है दैट इज योर समेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द न्यूट्रॉन, यू हैव टू डू दिस मास नंबर subtract minus this atomic number. So 12 minus 6 is our sixth option. So B option is correct over here. Right, so now this I'll just tell you this, if you can look at it properly. This is the next question in front of you will be shown shortly. Okay, so here is your next question.
Okay, so out of solid, liquid, gas, these three states of matter, you have to arrange according to its compressibility. Okay, so hurry up, give the answers for this. So the correct option for this question is your option B. Okay, so Shubham has got it correct. Okay, Akhil, you missed it. And then we have got Abhishek, correct answer. Khushi, correct answer. Garima Sisodia, I have got it correct. Right. So compressibility जो है basically it is a property which rigid substances will not have. Solid इतना rigid होता है तो उसको compress करना थोड़ा difficult होता है. ठीक है. Whereas you go to liquid, अब liquid में क्या है कि जो particle की space बढ़ जाती है. ठीक है ना. सो उनको कंप्रेस करना सॉलिड से ज्यादा आसान होता है. और गैस की बात करो तो ये भाई लोग ये पार्टिकल तो ऐसे है तो सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है ना. दूर दूर जितना दूर दूर जाते हैं टकराते हैं है ना. तो ये मोशन में रहते हैं एकदम से. एंड इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है. मतलब इट्स अ वेरी गुड कंप्रेसिबिलिटी. आप देख रहे हो आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर आता है उसमें भी गैस कंप्रेस करके इतना कंप्रेस करते जब गैस को आप हाई प्रेशर दे देते हो और लो टेम्परेचर दे देते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसीलिए हमने उसका नाम ही रख दिया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. राइट. सो गैस विल बी द मोस्ट कंप्रेसिबल थिंग. नाउ अब जो आपका फॉलो अप क्वेश्चन आ रहा है जैसे मैंने बोला एलपीजी. सो कैन यू नेम गैसेस प्रेजेंट इन एलपीजी. है ना. लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस है उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट रहती है. ठीक है ना. बेसिकली वो हाइड्रोकार्बन्स है. राइट. तो बताओ कौन सी. व्हाट आर द नेम ऑफ गैस विच इज प्रेजेंट इन द this LPG cylinder. Right. एंड यस अक्षय, जैसा कि आपने बोला आई वॉज हरिड, तो हमें हरी ही नहीं करना है. प्लीज इफ यू वांट टू बी वाइज एंड स्मार्ट, ओके, देन यूज योर आइज, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस. ओके, क्वेश्चन दो बार पढ़ना जरूरी है. मीथेन और हाइड्रोजन नहीं होता बच्चे, ये गोबर गैस नहीं बना रहे हम. ओके, एलपीजी का पूछा गया है. शुभम और आयुष आपने इसका आंसर सही किया है, ब्यूटेन. आयुष हीलियम जो है स्क्यूबा डाइवर्स लेके जाते हैं नीचे, तो हीलियम तो नहीं होगा. ठीक है. मीथेन फिर से मैंने बोला मीथेन सीएनजी में होता है, मैं बात कर रहा हूं एलपीजी की. ठीक है. सो एलपीजी में मेनली दो गैसेस पाई जाती हैं. पहला रैंक हम देते हैं किसको, ब्यूटेन को, और दूसरा रैंक देते हैं प्रोपेन को. ठीक है. इसके बाद भी बहुत सारी हाइड्रोकार्बन रहते हैं लेकिन ये भाई लोग रैंकर्स है अपने. ठीक है ना. तो एटलीस्ट आपको ब्यूटेन और प्रोपेन अच्छी तरह से अपने माइंड में ध्यान रखना है. ठीक है. सो दैट्स द लॉजिक ऑफ दैट. नाउ वी हैव द लिथियम. किसने लिख दिया भाई, मेटल नहीं डालते उसमें. राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन नाउ. ओके, अब इस क्वेश्चन में आई कैन गिव यू मोर टाइम बट यू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस. ओके, बिफोर यू मेक अ चॉइस. जल्दी. ओके. Ayush, you are very correct in that they have few alcohol also, because basically butane and propane, these two gases are colorless. Okay, and odorless also. Suppose अगर आपके यहाँ पे LPG गैस सिलेंडर जो है लीक हो जाता है, how will it be detected? Okay, that can only be detected if there is something added. So yes, thiol alcohol is added there, right, to make it smell like LPG. So now I'll just tell you the answer for this, right? So the correct answer for this is option B. Okay, option B is correct, and as I can see, Sakshi has done correct, Rushali has got it correct, and rest of you need to rethink. आपको क्वेश्चन दो बार पढ़ना चाहिए था. You should have read question twice. Okay, so basically they have given you four substances. One is plain water, second is alkali, third is acid, D is sodium chloride. So in out of all this solution there is only one base. Okay, a soluble base, that is alkali. So alkali and base, what is the difference? If a base is soluble in water, it becomes alkali. Okay, it's an Arabic word. Okay, so you should pronounce it like that. So phenolphthalein जो होता है ये एक वन साइडेड इंडिकेटर होता है. ठीक है ना. वन साइडेड आप लोग को समझ में आना चाहिए कि वो एसिड में इट विल नॉट गिव यू एनी इंडिकेशन, बट इन बेस इट विल टर्न पिंक. राइट. सो P फॉर phenolphthalein and P फॉर pink. Okay, so phenolphthalein gives pink color in base. Okay, pink color in base. जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका पिंक कलर. राइट.
So that is there. Now all of you, can you tell me, जो टर्मरिक होता है, ओके, जो टर्मरिक होता है वो बेस में कौन सा कलर देता है? ओके, एज यू ऑल नो दैट टर्मरिक इज अवर नेचुरल इंडिकेटर. कई इंडिकेटर्स होते हैं, देखो, एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता है, इस तरह एक नेचुरल इंडिकेटर भी होता है, राइट? सो नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक बड़ा फेमस है. जब भी आपकी मम्मी, वेन एवर योर मदर इज वॉशिंग क्लोथ्स, यू नो, एंड आपके कपड़े में कोई स्टेन था, इफ देयर वाज एनी स्टेन, सो इट टर्न्स रेड, है ना? तो कोई जादू मंत्र नहीं होता, है ना? दैट इज बिकॉज ऑफ द रेड कलर, इज बिकॉज ऑफ turmeric being a natural indicator. So I see most of you have answered correct the red option. साक्षी, आपने सही आंसर किया. ओके, अक्षय, येलो तो वैसे ही होता है टर्मरिक, है ना? ऐसे बोलने को तो कोई फायदा नहीं है. अखिल, अखिल, you have got it correct, right? So you can also try this at your home. Okay, just mix some soap in turmeric solution. You will see that yellow solution, yellow color will turn to red because this turmeric is a natural indicator. इसी तरह से we have rose, we have hydrangeas, we have petunia petals, we have red cabbage, we have purple cabbage, we have China rose also. Okay, so these are our natural indicators. Okay, so that is there. Now can you tell me what color will you get in the basic solution if I have taken methyl orange? Okay, what color will be shown? Okay, what color will you see when I have methyl orange in basic solution? What color will be given, right? So I just want the answers for this, right? So methyl orange, once you give the answer, I'll give you a very easy trick to remember the colors methyl orange can give in acid, base and neutral solutions. Okay, so colorless is wrong, white is wrong, blue is wrong, pink is wrong. Methyl orange I'm asking which color in the basic solution. So अभी तक किसी ने इसका आंसर सही नहीं दिया है as far as the responses are concerned, and many are trying so many colors. Again the question is methyl orange gives which color in basic solution? Okay, yes, finally I've got the correct answer from Abhishek Srivastav. Okay, yellow. ओके, येलो इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, उसका नाम था रॉय, राइट? द नेम ऑफ द मूवी वाज रॉय, राइट? सो रॉय की स्पेलिंग क्या होती है? ROY. तो मिथाइल ऑरेंज को याद करने का तरीका भी यही है. ठीक है, आर मतलब रेड इन एसिड, ओके, न्यूट्रल इन न्यूट्रल, ऑरेंज इन न्यूट्रल, ओके, एंड येलो इन बेस. ओके, येलो इन बेस. सो ये है आपकी ट्रिक. ये मूवी आप एक बार देख लेना, या कई बंगालीज होते हैं उनका जो सरनेम भी होता है वो क्या होता है? रॉय होता है. सो रॉय को याद रखना मिथाइल ऑरेंज के लिए. रेड इन एसिड, न्यूट्रल ऑरेंज, येलो इन बेस. इसके बाद से तो आपको कभी भूलना ही नहीं होगा. और उसका क्या बताया था फिनोल्फिलीन का? फिनोल्फिलीन, P फॉर पिंक, P for phenolphthalein in base, one-sided indicator. Now it's the time for the next question. Okay, so the next question is here in front of your screen. Read it twice. Okay, here it's reactivity series. This question is based on the reactivity series. Okay, this question is based on the reactivity series. So apply your intelligence, read the question twice and make a choice. Okay, let me see how many of you can make it correct this time. Okay. So the correct answer for this question is the option A. So because if you look at it, okay, Shivam has got it correct. Akhil, you have got it correct. So I see most of you are aware of the reactivity series, and in yesterday's live class, you please watch yesterday's live class also because it's a follow-up happening. So in the part 1 live class, we also learned a trick. एक मैंने trick display की थी आपको. You can just go and watch that video again. Okay, you will see that anything which is below hydrogen, okay, anything which is below hydrogen is will not be able to displace hydrogen. Okay, so in the reactivity series, mercury, Hg, is below hydrogen. Okay, rest all the elements like aluminium, magnesium and iron, they are above hydrogen in the reactivity series, right? So
That's the correct answer for that. Okay, now let's go to the next question. So here the next question is in front of your screen and attempt that. Okay, so temporary hardness. Okay, you know water कभी कभी हो जाता है hard, water becomes hard, and when you are not able to get foam or lather with the soap you are using, you will say that this water, ये water बहुत hard है, ठीक है ना? So hardness is basically because of the presence of some salts. Okay, now hardness is temporary and permanent both, राइट. सो हमने पूछा यहाँ पे कि टेम्पररी हार्डनेस कौन इम्पार्ट करता है, विच थिंग इम्पार्ट्स, विच सॉल्ट इम्पार्ट्स टेम्पररी हार्डनेस. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट इट करेक्ट. सो हेयर आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड हेयर. मैंने टेम्पररी हार्डनेस के बारे में पूछा है. सो द करेक्ट आंसर एज आई सी is given by Khushbu and I don't see any other name as of now, right? So the correct answer is bicarbonates. Okay, so the bicarbonates of calcium and magnesium, they will impart temporary hardness. अब इसको temporary इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपने इसे boil किया, okay, when you boil this, right? So when you boil this, it will disappear. Okay, then hardness won't be there, right? So that's why it is called temporary hardness, right? Now let's move to the next question. Okay, now here this question is in front of your screen. Very easy question. Okay, you should not take more than 5 seconds. Okay, this was also discussed in the last live class. Okay, so hurry up and you have to identify bonding. जो bonding process है, कौन सा element सबसे अच्छा है bonding process में, and in this question I expect most of you to give the correct answer. है ना शुभम, it's not oxygen. Okay, and Akhil, you have got it correct. The answer is carbon. Okay, कार्बन की दो ऐसी प्रॉपर्टीज है, एक तो उसकी टेट्रावेलेंसी, ओके, एंड सेकंड इज द कैटिनेशन. कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन. सो ये जो टेट्रावेलेंसी की प्रॉपर्टी है और ये जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है, ये जितनी अच्छी कार्बन ने दिखाई है, इतनी ज्यादा किसी भी एलिमेंट ने आज तक नहीं दिखाई, है ना? सो दैट इज द ब्यूटी. Now tell me which element is the most electronegative element in the entire periodic table. Okay, what name the most electronegative element. See, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, they want to gain electrons. जितने भी नॉन मेटल्स है, whether it is phosphorus, whether it is sulfur, whether it is chlorine, whether it is argon, okay, they all want to gain electron to become stable, right? So which element has got the highest electronegativity? ओके, बादल, यू हैव गॉट इट करेक्ट. अनय, लिथियम कैसे हो सकता है? लिथियम तो मेटल है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा. ओके, आयुष, यू हैव गॉट इट करेक्ट. ओके, सो इट्स फ्लोरीन. ओके, नॉट क्लोरीन, फ्लोरीन. ओके, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, इट हैज गॉट द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. पॉलिंग स्केल एक होता है which helps us to measure the electronegativity. So there fluorine has got 4.0. No other element but fluorine has got this, you know, khitab, or he has got this position in the periodic table. Now next question is in front of your screen. Again, it's very easy. Okay, and I will be expecting most of you to write the correct answer here. Okay, so hurry up, just start generating your responses. I was expecting as and when you see the responses should come up. Okay, so pencil lid, the pencil lid, it contains which of the following element out of the four options given in front of you? Okay, so yes, most of you have done it correct. That's great, right? अब वो lid मैंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए लिखा है और आप कंफ्यूज हो ही रहे हो. So the correct option for that is the carbon. Okay, so carbon basically graphite. Okay, and graphite, you also know that it has a shiny surface, it is very soft, it is used in lubricants also, it is used as a dry lubricant. And ये जो ग्राफाइट एलिमेंट है, इसने तो पूरे मतलब ऐसी प्रॉपर्टी रखी जो नॉन मेटल में किसी के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है. ओके, स्लिपरी है, कंडक्टिंग है, बेस्ट उसका प्रॉपर्टी यही है कि इट इज द ओनली नॉन मेटल. हालांकि ये एलेक्ट्रोप है कार्बन का. ओके, so it is the only non-metal which can conduct electricity. ओके, एक्सेप्शनल क्वालिटी है, आज तक ऐसा कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाया जैसा ये काम ग्राफाइट ने किया है.
ठीक है, आपको भी कुछ ऐसे ही काम करना है हमारे एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करके. यू हैव टू टॉप इट एंड serve the nations. Okay, so we have produced so many rankers and toppers, you know, they are serving the nation, and you can be one of them. So you should not delay and make the most of all the courses that we have, right? So here we go to the next question. Okay, so here is your next question. Rutherford, who was the student of J Thomson. Okay, तो इन्होंने अपने टीचर का जो एक्सपेरिमेंट था वो उन्होंने जे थॉमसन ने वाटरमेलन एक्सपेरिमेंट किया था. ओके, और प्लम पुडिंग मॉडल. सो ही थॉट दैट the atom is a watermelon where the seeds of the watermelon are electrons embedded and the reddish part is the uniformly charged positive sphere. Okay, but वो किसी के पल्ले पड़ा नहीं, वो उनको ऐसा कुछ दिखा नहीं, है ना. So that model was rejected, but उसका काम आगे बढ़ाया उनके स्टूडेंट रदरफोर्ड ने. उन्होंने किया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल को लेकर. सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, द सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज द न्यूक्लियस, जिसके अंदर दो मेंबर्स पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन. सो आइए आपको मिलवाते हैं रदरफोर्ड से, ठीक है ना. सो ही इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड. ओके, काफी रईस थे ये, राइट, क्योंकि गोल्ड फॉइल लिया था, थिन गोल्ड फॉइल. हम लोग तो एल्यूमिनियम फॉइल से भी ना कर पाते, बट ही टुक अ गोल्डन फॉइल. यू नो, देयर वाज अ रीजन फॉर दैट. देखो, गोल्ड जो होती है ना, इट इज वेरी मैलिएबल, है ना. वो अपनी अमीरी दिखाने के लिए नहीं किया था, उसका रीजन भी था, right? Gold is malleable and ductile. You know, 1 gram of gold can be converted into wires of 2 kilometers. Now that gives us an idea. Okay, that gives us an idea of the ductility ability of the gold. Okay, and the symbol of gold is AU, right? So you see, he just conducted this experiment. तो उसने देखा कि most of the alpha particles, okay, alpha particles are basically positively charged particles. Okay, alpha particles are positively charged particles. So obviously nuclear region में proton है, so positive should repel. So when he passed alpha particles, most of the particles passed without any deflection, which indicated that most of the atomic space is empty. Okay, then he saw that some of the alpha particles were bending by small angles. Okay, they were bending by small angles. That indicated there must be some positive charge inside, right? And third, एकदम बहुत कम particles ऐसे थे जो एकदम बाउंस बैक हो गए 180 डिग्री में. ओके, सो दैट इंडिकेटेड द पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर अ वेरी वेरी स्मॉल एरिया, एंड ऑब्वियसली ही वाज टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, राइट. सो ये काफी मतलब इट वाज changing, it has changed a perception of everyone in the scientific world, right? So like that, if you have to know the concept very properly and get to know the previous year questions and solve the quizzes, do enroll to our courses and you will really love the way we teach you. Okay, next question is in front of you. Here I can give you more time because it's a numerical, but it's a very easy numerical. Okay, so just start solving this now. Okay, and for those who feel that the questions are easy, let me tell you, they all are from previous year defense examinations only. So that's the thing, that you are able to understand the concept. Now I will see how many of you are able to solve this question. Okay, so I have started getting responses, and the correct option I have not received yet. The correct option for this is option C, right? So again, you see 20 gram is the solute. They have taken 20 gram solute, okay, and 180 gram water. Okay, so basically solute plus solvent makes the solution. So total mass of the solution will be 200 and the mass of solute is 20. So mass of solute by mass of solvent is the mass percentage, right? So it will be 20 upon 200. That becomes your 10%, right? So that was the answer for this question. Now let's go to the next question. Okay, so the valency of elements depend upon which of the following, which you have here. So what will decide the valency of electrons? Okay, now you also know, if you know the valency of electron, you will very easily be able to know whether it will lose electron or it will gain electron, right? So, and metals they lose electron, and non-metals they gain electron, right? And they form an ionic bonding. So the correct option is the option D here. So I see most of you have done it correct except a few, right? So this has to be there in your mind. Valency means last. Okay, last shell. Valence shell means the last shell.
right? So we'll go for the next question here. Radon. Okay, so what do you think, which statement about radon is correct here? Is it an inert gas? Is it used in artificial fiber? Is it an explosive? Is it a metal? Okay, so you have to give the answer accordingly, right? So here we have started getting answers, and yes, most of you have got it correct. It's an inert gas. Okay, so you see in front of you the list of inert gases, right? So here, if you see, the most of you have done it correct. Anil has done it correct. Piyush, Roslyn, you all have got it correct. And I also told you there are various names for an inert gases. These, they have fully filled valence shell electrons, right? So the next question is again in front of you. Just start solving. You have to identify out of the four options which element has got the same electrons. Okay, so first you should know how many electrons are there in chlorine given here. Okay, first you should try to be try to know that first, and then you will be able to calculate. Okay, if plus charge is there, then definitely you will have to subtract the number of electrons being shown, and if minus charge is there, then you will have to add electrons. So accordingly you have to identify where there are two electrons here. So the correct option for this question is option C, right? Option C. You, as you can see, argon has 18 atomic number. That means it has 18 protons and electrons, but when it loses one electron, okay, it will become 17 electron. Okay, it will become 17 electrons. So that is how you have to calculate, right? So this type of species which have same number of electrons, they are known as isoelectronic species. ओके, सो आइसो का जो मतलब होता है केमिस्ट्री में, वो होता है सेम. ओके, अब उसके आगे जो लग जाता है ना, वो चीज सेम है. जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ आइसोथर्म, मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है. इफ आई से आइसो बार मींस एक ऐसा ग्राफ जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, राइट? सो आइसो का मतलब क्या होता है? सेम और कांस्टेंट, right? So that is the meaning of that. So that's why, that's how we have isoelectronic species as well, right? Now the next question is in front of you. Okay, again I will tell, read this question twice before attempting, right? So the question is that when you will dissolve these compounds in water, which one of them will form a basic solution? Okay, so there are so many examples. You have to identify which one will be forming a basic solution here, right? So the correct option for this question is the D, the caustic soda, sodium hydroxide, and it's a very strong base. Dissociation level is very good, and that's how it can start conducting electricity. Okay, please remember, pure distilled water will not conduct electricity. Only the salty and tap water will conduct electricity, because for the conduction of electricity there is requirement of ions to flow. Okay, without the flow of ions we cannot expect the conduction of electricity to take place, right? So that is one thing. Right, now we move on to the next question over here. Sorry, that's all the questions we have finished here, right? And we will be meeting again tomorrow at sharp 19 hours, right, for the next set of 20 questions. And definitely please be ready and be interactive like this. Okay, we will be discussing all the important defense questions, and hence we'll be covering a substantial amount of syllabus, right? And you will get a better understanding of chemistry, right? So do enroll to our chemistry courses in the NDA, whether it is NDA subject, whether it is a CDS exam, AFCAT exam, OIR test, CDS OT. Okay, so we have got all the examinations covered, and we will let you prepare for the best, right? And we have also got the mock test to help you assess your performance. And do download the app and get a part of the learning, and become do fulfill your dream of becoming a gentleman cadet. We are there for you, and don't pay the full amount. We have got a code, that is warrior 10, and as and when you press warrior 10 you will get 10% discount. So I hope you are learning small concepts one by one, and I believe if you complete the entire series of 100 questions, you will be left with a lot of knowledge. So keep your josh very high. Okay, never ever doubt yourself. You are here to believe yourself.
So believe yourself, put in all your efforts. We are there to help you. Even if you have any questions which I have not answered, you can very well put it on the comment box also. I will be more than happy to get back to you and solve all those queries. Till then, everyone, my best wishes. Keep learning everyone. Stay healthy, stay blessed. Thank you. Jai Hind.